Hello guys, welcome back to our channel. So in our endeavor to post a video a day, I'm again here with my fourth video on the chapter equation of a straight line. I hope you have seen all the first three videos and by now you are learning it well. आपको equations का concept clear हो रहा है, आपको equations के बारे में पता लग रहा है, कौन से questions solve करने हैं, क्या उनके concepts हैं, किन points पर emphasize करना है. I hope you are getting it all. We are in the unit coordinate geometry of ICSE syllabus. We are targeting the board exams of 24. So all those who are preparing the board exams of 24, they must see these videos very carefully. They will have entire preparation material for with them for these chapters. We will be posting the further units one by one. Right now we are in coordinate geometry. So those who have studied the first three videos, I'm taking you to the next topic of this chapter. We have done earlier the inclination of line, the slope of line, and the questions depending upon the slope, conditions of perpendicularity, conditions of perpendicular and parallel lines, m1 equal to m2 and m1 dot m2 equal to -1. I am moving from there. I am moving ahead from there and I am trying to now take the concept to the next level. Now let us see what lies in store in this video. So जो लोग seriously study कर रहे हैं इन topics को, वो आप देखिए यहाँ पर इस diagram को ध्यान से देखते हैं. X and y axis as usual given to us. So you can see that this line is intersecting line y axis and x axis at 2 points, at point A and at point B. Now x point is x comma 0 and B point is 0 comma y. At this point is on x axis, this point is on y axis. So we can say that this line is having x-intercept on x-axis and y-intercept on y-axis of length x and y. That means अगर मेरे पास line के intercepts पता हैं that x-intercept is 5 and y-intercept is say 4, then line is passing through 5,0 and 0,4. इसका रिवर्स अगर लाइन का पासिंग पॉइंट 5,0 है, दैट मींस लाइन इज पासिंग एट 5,0 ऑन x एक्सिस एंड 0,4 एट y एक्सिस. ये लाइन के पासिंग पॉइंट्स हो गए, इंटरसेप्ट्स हो गए 5 एंड 4. x इंटरसेप्ट हो गया 5, y इंटरसेप्ट हो गया 4. इनको हम कहाँ यूज करते हैं? I'll tell you later on, but right now let us move ahead from this topic. Let us talk about that let us talk about the slopes, the intercepts of the line. Sorry. So we know that by now intercepts can be negative and positive both. We can have a negative intercept. We can have passing point 5,0 and 0,-4 as well. In that case, the equation would be like this. Passing through this point is -5,0 and this point would be 0,-4. This origin y-axis and x-axis. I have points -5,0 and 0,-4. We have got intercept -5 for x-axis and -4 on y-axis. I move from here now and I'm entering into very important point or part of this chapter which we are going to use generally. We had been preparing for this point by now. So I am talking about now the types of equation, the various forms of equations of straight line. You can see the first form given to us is slope intercept form. So जब हमारे पास लाइन का इंटरसेप्ट है एंड स्लोप है, सपोज स्लोप लाइन का m है एंड वी हैव y intercept as c. We don't need x intercept. There's intercept on y axis.
So what do we require? We require intercept on y-axis. We don't require intercept on x-axis to find the equation of a line. I'm giving you direct equation for such case when we have the values of slope and y-intercept given to us. The equation of line is y equals to mx plus c. Y equal to mx plus c. Now you see very carefully here in this expression, m is the coefficient of x and c is constant term. So we should be having the knowledge of coefficient of x and the constant term to get the equation of line y equals to mx plus c. The equation is y equal to mx plus c. The coefficient of x is the slope and the value of c is y-intercept. That gives us the equation of line y equals to mx plus c. Y equal to mx plus c is the equation of a line in slope-intercept form. Slope-intercept form, y equal to mx plus c. Please understand this point carefully. So whenever I have an equation, so if I have a equation y equals to say 3x plus 5. Now that means the passing point of the slope, you can see slope is positive. Now if slope is positive, so you know this, those lines which have acute angles with the x-axis in anti-clockwise direction generally have slope positive and y-intercept is 5. This point should be 0, 5. I hope you understand this. So I have a basic idea of a straight line in my mind. The equation should give you an idea, a visualization in your mind how to that where line should be passing up, line का क्या angle होगा, वो कैसे inclined होगी. All these things should be clear to you just by knowing the equation of a line. So this line is y equal to 3x. I can find out the point at which line is passing through x-axis. I can put x comma 0. I can find out the point at which line is passing through y-axis. I can put 0 comma y. That would give me 0 comma 5. And if I want to find the point on x-axis, I have placed y equal to 0. That would give me minus 5 by 3. This point should be minus 5 by 3 comma 0. So the single equation of a line gives us whole lot of information about the slope of the line, about the y-intercept, about the passing point on x-axis, passing point on y-axis, and in which quadrant line should be going up. Line is the first, second, and third quadrant. This line will never enter the fourth quadrant. Fine. So I have discussed about y equals to mx plus c. The first form is slope intercept form. The next one is point slope form. Point slope form of a straight line. What is a point slope form of a straight line? Point slope form of a straight line is an equation. Now this form is most important for the chapter. So I'm writing it here. Most important. Point slope form is the most important equation for your syllabus, for your chapter. More emphasize on this, and again repeating, it is very important equation for your syllabus. Point slope form. जब मेरे पास लाइन का एक पासिंग पॉइंट है और लाइन का स्लोप है, जब मेरे पास लाइन का एक पासिंग पॉइंट है और उसका स्लोप है, then the equation of line is y minus y1 equal to m x minus x1. Here I can replace passing point in place of y1 and x1, and I can put slope here at m. So let, for example,
slope is minus 3 by 2 and passing point is 3 comma 5. That will gives me y minus 5 equals to minus 3 by 2 x minus 3. Make it simple. 2y minus 10 equals to minus 3x plus 9, or 2y plus 3x equals to 19. Equation of a line is ready. So whenever you have a slope and a passing point of an equation, you can very easily drive out the equation of a line by using the formula y minus y1 equal to m x minus x1. I hope you understand this point very carefully. Here y and x are the variable of the point through which line will pass, and y1 and x1 are the given point of the line where we know that line is passing through. Again I'm repeating, आपके पास किसी भी क्वेश्चन के अंदर जिसमें हमको इक्वेशन फ्रेम आउट करनी है, आपके पास लाइन का स्लोप होगा या यू कैन से स्लोप निकालने का तरीका होगा। लाइन किसी गिवन लाइन के परपेंडिकुलर होगी, किसी गिवन लाइन के पैरेलल होगी, किन्हीं दो पॉइंट से पास ऑन कर रही होगी, एंड लाइन का एक पासिंग पॉइंट होगा। लाइन का एक पासिंग पॉइंट होने से और स्लोप की अवेलेबिलिटी होने से स्लोप हम कैसे निकालेंगे ये हमको क्वेश्चन में देखना है। क्या गिवन लाइन क्या रिक्वायर्ड लाइन गिवन लाइन के पैरेलल है, क्या रिक्वायर्ड लाइन किसी लाइन के परपेंडिकुलर है, क्या रिक्वायर्ड लाइन किन्हीं दो पॉइंट से पास ऑन हो रही है, ये क्या हमको रिक्वायर्ड लाइन का इंक्लिनेशन गिवन है। ये सब चीजें किस काम आती हैं, स्लोप निकालने की काम आती है। एंड इसके अलावा हमको एक पासिंग पॉइंट का सोर्स गिवन है, रिक्वायर्ड लाइन किन्हीं दो पॉइंट की पासिंग पॉइंट से पास ऑन हो रही है, रिक्वायर्ड लाइन किन्हीं दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास ऑन हो रही है। हमको एक पॉइंट निकालना है और हमको लाइन का स्लोप निकालना है, एंड पुट देम ऑल इनटू y minus y1 equal to mx minus x1. This will gives you the equation of a straight line. I hope I am clear to you regarding this equation. Very important. You got a question of 3 mark or 4 mark on this topic. So the next one, 2-point form. So now I have been given the earlier one. I had been given one passing point. Now I had been given two passing point. Now it says to what? आपको हमेशा यही इक्वेशन यूज करनी है, चाहे क्वेश्चन में दो पॉइंट्स दे रखे हैं, चाहे क्वेश्चन में एक पॉइंट दे रखा है। जिन क्वेश्चन में दो पॉइंट्स गिवन होते हैं वहां पर हमको स्लोप का कोई और सोर्स नहीं गिवन होता है। जिन क्वेश्चन में दो पॉइंट गिवन होते हैं पहले हम उन दोनों पॉइंट का स्लोप निकालते हैं, उन दोनों पॉइंट से स्लोप निकालते हैं। The same formula of slope y2 minus y1 upon x2 minus x1। जब हमको उन दोनों पॉइंट से लाइन का स्लोप मिल जाता है फिर वो स्लोप लेकर और इनमें से कोई भी एक पासिंग पॉइंट लेकर हम अपनी इस लाइन में ही पुट कर देते हैं, एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। Although the book has given this formula sometimes, that y minus y1 equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 in the bracket x minus x1. This also goes for the equation of a straight line. As you can see, this is acting as a slope and this is a passing point. Any one of these two, I can choose any one of these two to put them here. Y minus y1 equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. That gives me slope of a straight line. I hope I'm clear about these three forms of line. So first one I discuss about the point slope form, the point slope form. The previous one was slope intercept form. The slope intercept form. Next कौन सी है? One point form, one point slope form. And the second one is 2-point form, जहां हमको लाइन के दो पॉइंट्स गिवन है। इन तीनों से हम इन तीनों फॉर्म्स को ही जनरली क्वेश्चन में यूज किया जाता है। Apart from that, I'll give you one more form later on, which they will be using the two intercepts of the line. So I require ultimately the minimum requirement for making a equation of a line is slope of the line
and intercept or slope, one passing point or two passing point. So if slope is given and intercept is given, y-intercept is given, I can use the slope intercept form y equal to mx plus c. if मेरे पास एक पासिंग पॉइंट और स्लोप है, आई कैन यूज पॉइंट स्लोप फॉर्म. अगर मेरे पास दो पासिंग पॉइंट है, पहले उनसे स्लोप निकालिए और फिर दोनों पॉइंट में से कोई भी एक चूज कर प्रीवियस इक्वेशन में ही पुट कर दीजिए, तभी मेरे पास इक्वेशन आ जाता है. I hope I'm getting clear to you regarding this. Now there is one more thing which is left there, that is equally inclined lines. Now inclination gives us the slope of the line. You know that very well. So you see very carefully here, this inclination is acute. In anti-clockwise direction. This is giving us the value of m as 1. This line CD is having a angle. If I make it again from here, you see very carefully, this angle is 135, the obtuse angle. In anti-clockwise direction. The slope for line CD equals to is negative, is -1, and slope for line AB is 1. So always remember, जो lines एक्सिस के इक्वली इंक्लाइंड होती है, द इंक्लिनेशन हम केवल एक्स एक्सिस से ही फाइंड आउट करते हैं. जो लाइंस एक्सिस के इक्वली इंक्लाइंड होती हैं, उसमें एक का स्लोप नेगेटिव होगा और एक का स्लोप पॉजिटिव होगा. दे जनरली हैव वन कॉमन पासिंग पॉइंट. दे आर ऑलवेज two inclined lines. There are two lines which are inclined to x axis, having slope -1 and having slope +1. एक का स्लोप -1 होगा और एक का स्लोप +1 होगा. हमेशा इन दो स्लोप्स को यूज करके ही लाइंस के इक्वेशन निकालिए. आपको एक पासिंग पॉइंट तो बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में लिख कर आएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस व्हिच आर इक्वली इंक्लाइंड एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 2,0, 2,5, 1,6 व्हाटएवर. तो एक बार तो आप पासिंग पॉइंट लीजिए x1 y1 और एक बार स्लोप लीजिए +1. फिर एक बार दोबारा पासिंग पॉइंट लीजिए x1 y1 एंड स्लोप लीजिए -1. ये आपको फर्स्ट इक्वेशन देगा और ये आपको सेकंड इक्वेशन देगा. आपके पास हमेशा इक्वेशन ऑफ लाइन इस तरीके से आ जाती है, x1 y1 एंड x2 y2 की हेल्प से. तो जब कभी भी क्वेश्चन में इक्वली इंक्लाइंड लाइन की बात आती है तो क्या ध्यान रखना है बच्चों, कि एक का स्लोप +1 है और एक का स्लोप -1 है और कॉमन पासिंग पॉइंट है. एक पासिंग पॉइंट मिल गया, एक स्लोप मिल गया. इक्वेशन इज y - y1 इक्वल टू mx - x1. I hope it is clear to you here. So I'm summarizing this topic here. We had discussed about today. The first equation was slope intercept form y equal to mx plus c. Y is slope and c is y-intercept. I add one more into it. मेरे पास अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन के x इंटरसेप्ट है उसको स्मॉल a से मान लीजिए एंड y इंटरसेप्ट है उसको स्मॉल b से डिनोट कर लीजिए. Then the equation of a line is x upon a plus y upon b equals to 1. This gives us directly the equation of a straight line whose x-intercept and y-intercept are known to us. X by a plus y upon b equals to 1. Please remember, this is not in your book, but we can use it somehow at some places. I got the next equation
पॉइंट स्लोप फॉर्म, मेरे पास लाइन का स्लोप है और एक पासिंग पॉइंट है। x1 y1. Equation is y minus y1 equal to m x minus x1. The fourth form of the line is two-point form. We got two passing point of a straight line. Find the value of m and use any one passing point, and again use y minus y1 equal to m x minus x1. Always remember, आपके पास दो पासिंग पॉइंट्स हैं, स्लोप निकालिए, कोई एक पॉइंट चूज करिए एंड यूज द पॉइंट स्लोप फॉर्म द इक्वेशन और इससे लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर लीजिए। आपको इस चैप्टर के अंदर यही चार कॉन्सेप्ट्स यूज करने हैं, यही चार फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमको यूज में लेकर आनी है। क्वेश्चन के अंदर हमेशा somehow or other आपको ध्यान रखना है, स्लोप निकालने का कोई तरीका होगा और एक पासिंग पॉइंट निकालने का कोई तरीका होगा। आप जैसे ही वो पासिंग पॉइंट और स्लोप अटेन कर लेते हैं, हमको तुरंत इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने का मौका मिल जाता है। बोथ गिव्स इक्वेशन which have what? Which have the concept of section formula and the concept of straight line clubbed into one, and you got a 4-mark question. So always be ready to have a question which have the concept of straight line and the concept of midpoint or section formula, finding ratio, something of that kind, clubbed into one question. That is the basic formation of the question we get into our exam. We got two questions generally. One question is of marks 3 in first section, and now we have got no first section of marks 3. We have got section of 4 questions in section 1. So we might get a lengthy question of 4 mark in section A and question of 3 mark in section B, or only a single question of question number 3, marks 3 or marks 4 in section B, and 1 or 2 1 markers. So be ready for that. Prepare these equations many times. In the next video we will take the questions on these 4 equation of line. So पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अपनी कॉपी में चारों इक्वेशंस के नोट्स बनाइए और फिर हम नेक्स्ट वीडियो जो आपको डालेंगे, जो मेरे ख्याल से कल या परसों आपको पोस्ट होगा, उसमें हम अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाएंगे फॉर द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द बुक ऑफ कंसाइज. To all those students who are going to attend ICSE board in the March 24, for them these videos are very important. It is a free video facility. It is a free material available for you. Go through the videos, suggest what else do you want, suggest us if there is anything else you want us to add into these videos. I will add my assignment in the last video of the unit. There will be a complete comprehensive video for the entire concept of this unit of coordinate geometry. By then, wait for my next video. Thank you guys. Subscribe the channel as soon as you can. Thank you.